My dear brothers and sisters, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. This week, we are talking about how compassionate Jesus was to every person, whether they were rich or whether they were poor. We have two incidents taking place. One is there is an official called Jairus. He is not a Jew, but who has a lot of power. He could do a lot of things, but he could not cure his own daughter despite all the efforts. He believes that a person like Jesus could do something. He comes, he falls at his feet and begs of him, come and do something for my daughter. And Jesus surely wants to do something for her. But in between, something else happens. There is a woman who is suffering from hemorrhage from last 12 years. And you know, my dear friends, that women who suffered from hemorrhage were called unclean people. They could not approach anyway. They could not mix among the people. And so you can imagine for last 12 years she was suffering. But she has no courage to go in front of Jesus because there was a large crowd. But then she goes and just touches the fringe of his garment, and lo, something happens. She is immediately cured, and even Jesus feels that the power has gone out of him. He calls out, "Who is that who has touched me?" The woman is terribly afraid that what she has done maybe was not acceptable to Jesus. But then she comes forward, and then she says, "Well, it was I. Forgive me." And Jesus compassionately calls her a daughter. Your faith has saved you. Thereafter, Jesus moves forward and he goes to that house where the daughter of Jairus was there. She was about 12 years. Jesus takes her hand and lifts her up. People say she's already dead, but then she wakes up and she is cured. My dear brothers and sisters, Jesus was a man for others. He was a great healer. But he was not just a miracle worker. He was a compassionate man. And when people came to him, whether they were hungry, whether they were physically afraid of something or other, when they came to him, he did not deny them. He always accepted them. Greater is our trust in him. Greater is our cure. Greater is the way with which Jesus helped people. प्यारे भाई और बहनों, मैं आज यही बताना चाहता हूं, अक्सर हम प्रभु के समान बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए। कुछ लोगों के लिए हम कुछ करते हैं इसलिए क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनके हमें कोई मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इन लोगों के लिए हम कुछ करने के लिए जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम सही लोग हैं। प्रभु हमें यही बताता है, हम सभी किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मान लो आपका पड़ोसी अस्पताल में है और वहां पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसका दर्शन देने के लिए जाते हो, उसका स्पर्श करते हो, उसको कितना अच्छा लगेगा। या कोई ऐसा कोई दुखी व्यक्ति है, उसके घर में कोई मर गया है, उसको मिलने के लिए आप जाते हो तो भी आप कुछ करते हो। यानी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और यही हमें प्रभु सिखाता है। हर व्यक्ति हर समय ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरों के काम आना, एक दूसरों को मदद करना, हमदर्दी जताना, एक दूसरों के लिए कुछ करना या प्यार करना या प्रार्थना करना, यही प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु में बहुत कुछ था क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र थे, वो सब कुछ करते थे, लेकिन जरूरत थी कि हम उनके पास आए। जैसे जायरस का जो था वो एक अधिपति था, उसके पास पावर था, लेकिन उसने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उसने मान लिया कि ये प्रभु जो है वो ईश्वर का पुत्र है, बेटा है, और वह सब कुछ कर सकता है, और इसीलिए उसकी बेटी जो है ठीक हो गई। ठीक उसी प्रकार 12 साल से वह जो औरत जो है जिसको
खून निकल रहा था और वो दूसरों के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने भी भरोसा रखा, एक ना एक दिन प्रभु मुझे ठीक करेगा। केवल उसके वस्त्र को उसने स्पर्श किया, बस इतना ही था। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर पर भरोसा रखें, हिम्मत ना हारें, यह ना सोचें आज होगा तो कभी नहीं होगा। कभी के हम जो कहते हैं ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। विश्वास एक बहुत अच्छी चीज है। जो विश्वास करता है वो कभी भी मर नहीं जाता, वो हमेशा के लिए वो जीता रहता है, और उसके जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ आते हैं उसको झेलने के लिए ईश्वर उसे मदद करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस लर्न समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड. The Lord is always compassionate. He is full of love, full of generosity, and He wants us also to do the same for one another. People who help each other are people who are working according to the plan of God. Thank you and God bless